नेक्स्ट ग्रुप 15 एलिमेंट का लिखो। Occurrences and general properties. केमिकल प्रॉपर्टीज पे जनरल जो होता है वो उसके बाद लिखते हैं। नॉर्मल बिहेवियर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ऊपर वाले एलिमेंट है नॉन मेटल्स मेटालॉइड, फिर उसके बाद आ सकते हैं लास्ट में क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो लिखो इसको। नाइट्रोजन एंड phosphorus are non-metals. Nitrogen and phosphorus are non-metal. Arsenic and antimony. Nitrogen and phosphorus are non-metals. Arsenic and antimony are metalloids. Bismuth is a typical metal. Bismuth is a metal. फिर इसका प्लेसेस में लिखेंगे। First one is nitrogen is present. Nitrogen is present in the atmosphere as 78% by volume. Nitrogen is present in the atmosphere as 78% by volume. Whereas in the earth crust, it is present as sodium nitrate NaNO3, bracket में उसको लिखो Chile saltpetre CHILE SAATPET Chile saltpetre, then KNO3 इसमें लिखो आगे KNO3 potassium nitrate KNO3 Indian saltpetre. KNO3 is Indian saltpetre. And then proteins वगैरह में अलग से अवेलेबल हो जाएगी। Next point, phosphorus is present in the minerals of hepatite family. Hepatite family क्या लिख सकते हैं CA9 PO46 CaX2, where X can be fluorine, chlorine, OH, ये ग्रुप्स हो सकते हैं। Hepatite family. जैसे कि आपके पास फ्लोरोपेटाइट प्रेजेंट रहता है। तो फ्लोरोपेटाइट में सिर्फ X के प्लेस पर F पुट कर देंगे CA9PO446 CF हो जाएगा।
Next point. Arsenic, antimony and bismuth. Arsenic, antimony and bismuth are found mainly as arsenic, antimony and bismuth are found mainly as sulfide minerals. Arsenic, antimony and bismuth are found mainly as sulfide minerals. Sulfide minerals. Reactances and chemical properties to their papers for 15. So next we go group 16 elements, differences and different properties. Oxygen and sulfur are non-metals. Oxygen and sulfur are non-metals. Selenium and tellurium are metalloids. Selenium and tellurium are metalloids, SET. And polonium is a radioactive metal. And polonium is a radioactive metal. तो इस ग्रुप का नाम chalcogens क्यों लिखते हैं? That is because chalcogens is the mean of brass. और brass किससे बनता था? कॉपर और जिंक से. तो कॉपर के जो मिनरल्स होते थे उसमें इस ग्रुप के एलिमेंट्स एसोसिएटेड होते थे. तो ऑक्सीजन रहा या फिर सल्फर प्रेजेंट रहा तो उसके वैसे ही नाम आता है. सल्फाइड मिनरल्स में भी प्रेजेंट रहेगा ऐसे. Occurrences में फिर लिखो. Oxygen is the most abundant elements of all elements on Earth. Oxygen is the most abundant element of all elements on Earth. Next one. तो ऑक्सीजन अपने पास एटमॉस्फेयर में भी रहेगा. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के टाइप लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के H2O प्रेजेंट है और प्लस में मिनरल्स ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसमें भी प्रेजेंट है मोस्ट एक्टिव. Sulfur exists primarily as sulfur exists primarily as sulfates such as sulfur exists primarily as sulfates such as gypsum. मिनरल्स के नेम और फॉर्मूला उसके जो है लिखो. gypsum CaSO4.2H2O. CaSO4.2H2O. Epsom salt MgSO4.7H2O. MgSO4.7H2O. Then baryte BaryT
BARYE, barite, BaSO4, BaSO4, and in the form of sulfides, and in the form of sulfides such as, and in the form of sulfides such as galena, PbS, galena, PbS, zinc blende, zinc blende, BLENDE, zinc blende, ZNS, and copper pyrites, PYRITES, copper pyrites, CuFeS2, CuFeS2. Next one, selenium and tellurium. Selenium and tellurium are found as metal selenites and tellurides. Selenium and tellurium are found as metal selenites and tellurides in sulfidose, in sulfidose. तो सल्फाइडोर के साथ ही ये मिलेंगे अपने पास कॉपर का जैसे रूट था उसमें भी बदल सकता है एज एन यूनिट. और लास्ट polonium occurs in nature. Polonium occurs in nature as a decay product. Polonium occurs in nature as a decay product of thorium and uranium minerals. As a decay product of thorium and uranium minerals. तो इन पॉइंट्स पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मिनरल्स के जो नेम लिखे फॉर्मूला उसका लिखा समहाउ वो लिंक करके आ सकता है. बैरिट जैसे क्या होते हैं, कॉपर पायराइट्स क्या होते हैं, मेटलर्जी भी क्या ट्रांसफर कोर्स में है उसमें जब वहां पे जाएंगे तो वहां पर कॉपर पायराइट से वो ऑब्टेन करें तो फर्नेस कौन सा यूज किया तो वो लिंक कर सकते हैं. तो पायराइट में सल्फाइड और है, फर्नेस यूज करो तो उससे कॉपर जो फॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं वो अलग से भी पढ़ते 17 फिर लिखो ग्रुप 17 एलिमेंट. ग्रुप 17 में मोस्टली जो एलिमेंट्स थे उनकी नॉन मेटल्स होंगी. लास्ट में नॉन मेटल नेचर क्या होता है, टेक्टोराइड को भी सुधा रहता है वहां पे हाईएस्ट रिस्क उसमें कुछ अलग नहीं लिखा है नॉन मेटल के. उसमें एक स्टेटमेंट लिखो, these are mostly non-metallic elements. एसिडिक तक का ही अब पढ़ रहे हैं. These are mostly non-metallic elements. The next point, fluorine is present. Fluorine is present as insoluble fluorides, as insoluble fluorides, as insoluble fluorides.
उसमें लिखो फ्लोरस्पार, FLUORSPAR, फ्लोरस्पार. Fluorspar is Ca2, fluorspar. Then cryolite, cryolite, Na3AlF6, Na3AlF6. Then fluoroapatite, fluoroapatite. So apatite already known as state we are going to next is fluoroapatite. Next point, chlorides, bromides and iodides. Chlorides, bromides and iodides. Chlorides, bromides and iodides are present in seawater. Are present in seawater. In the form of, are present in seawater in the form of their salt, in form of their salt with sodium, potassium, calcium and magnesium. Are present as their salt with sodium, potassium, magnesium and calcium. Carnallite, क्लोराइड का एक मिनरल है. Carnallite, carnallite KCl dot NgCl2 dot 6H2, KCl dot NgCl2 dot 6H2. तो ड्राइड अप सी जो होते हैं उसमें इनकी आप अवेलेबल होगा, ये मिलेगा वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं. तो पानी है तो वो ड्राइड अप कैसे? ड्राइड अप सी वो कभी सी हुआ करता था, वो अब नहीं है, वो ड्राई हो चुका है. सॉल्ट बासन मोस्टली एक्सकवेट भी करते हैं लोग, सॉल्ट ऑब्टेन भी करते हैं. कॉन्टिनेंट जैसे ब्रेक हुए, कॉन्टिनेंट जब बनते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कुछ रूट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. तो मान लो कोई अगर लैंडलॉक हो गया, सी जो पहले एग्जिस्ट कर रहा, तो ओवर द टाइम क्या होगा, इट विल गेट ड्राई. ड्राई हो गया तो जो मिनरल्स वहां तक है वो तो स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट है, तो वहां से फिर उनको निकाला जा सकता है, फिर वेट कर सकते हैं. मरीन लाइफ में मेनली जो होता है आयोडीन अगर अवेलेबल रहता है, जैसे सीवीड्स हो गए, उसमें आयोडीन का अमाउंट बहुत अच्छा खासा मिलता है, उसको ऑब्टेन कर सकते हैं. Then फिर ग्रुप 18 एलिमेंट्स लिखो, नोबल गैसेस. Group 18 elements, noble gases. So all the elements of group 18, all the elements of group 18, तो एक्चुअली जो हम लोग पढ़ रहे हैं एलआर are found to be in gaseous state. All the elements of group 18 are found to be in gaseous state, and they are chemically unreactive. And they are chemically unreactive. Next point, all noble gases except radon, all noble gases except radon occur in nature, in atmosphere, occur in atmosphere. Occur in
atmosphere, their abundance in dry air is less than near about 1%. Their abundance in dry air is near about 1%, near about 1%, of which argon is the major contributor. Of which argon is the major contributor. Next point, helium and neon are found in minerals of radioactive origin. Helium and neon are found in minerals of radioactive origin. Example, pitch blende, PITCH, BLEND, pitch blende. Next one, the main commercial source of helium is natural gas. The main commercial source of helium is natural gas. Natural gas. Xenon and radon are the rarest elements of the group. Xenon and radon are the rarest elements of the group. Next, radon is obtained as a decay product of radium. Radon is obtained as a decay product of radium. Radium-226 as a decay product of radium-226. अल्फा डीके यहाँ पे होता है, तो रेडियम से रेडॉन ऑप्टेन होगा प्लस अल्फा रेस. ये पूछ सकते हैं रेडॉन ऑप्टेन कैसे हुआ या फिर सोर्स क्या है उसका. तो ये इस पॉइंट पे एक बार चेक कर लो, अकरेंसेस वगैरह जो लिखे हुए हैं उस पर. और जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे फॉर 13 ग्रुप प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है, और ऑक्सीजन का कितना रहेगा ऑक्साइड्स में, -2 रहेगा, 3 और 2 हो गया, तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ऑक्साइड्स का टाइप क्या होगा, E2O3 टाइप बना सकते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज. Chemical properties when we start with first group 13 element. थोड़ा सा डिस्कशन पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा एंड देन फिर जो रिएक्शंस होते हैं उसके ऊपर जाएंगे. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट पे पॉइंट लिखते हैं उसको. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन पे जब लिखा हम लोग, बोरोन का आयनाइजेशन एंथैल्पी रिमेनिंग एलिमेंट से बहुत हाई है, तो सम ऑफ 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी से चेक करें बहुत हाई वैल्यू मिलता है. बहुत हाई वैल्यू मिलने से क्या होगा कि वो नॉर्मली आयनाइज नहीं होना चाहिए, तो 3 वो क्रिएट नहीं करना चाहता है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स ही क्रिएट करता है. whereas एल्यूमिनियम में उतने हाई वैल्यूज नहीं है, वो ब्रेक हो सकता है, तो आयनिक कंपाउंड्स भी बना सकता है. तो फर्स्ट पॉइंट लिख, ड्यू टू very high value of first 3 ionization enthalpy,
due to very high value of phosphorylation countries, boron does not form plus 3 ion. Boron does not form plus 3 ion. Rather, it only forms covalent compounds. Rather, it only forms covalent compounds. Second point, aluminum can form plus 3 ion. Aluminum can form plus 3 ion and is a highly electropositive element. Aluminum can form plus 3 ion and is a highly electropositive element. Metal, in fact, is also highly electropositive metal. Next point, as we go down the group, stability of plus 3 oxidation state. As we go down the group, stability of plus 3 oxidation state decreases and plus 1 oxidation state increases. As we go down the group, stability of plus 3 oxidation state decreases and plus 1 oxidation state increases due to which effect? Inert pair. Inert pair. Due to inert pair effect. तो उसके बाद देखो enthallium NTL plus 1 oxidation state is predominant. NTL plus 1 oxidation state is predominant, whereas plus 3 is highly oxidizing. Plus 3 is highly oxidizing. तो plus 3 में highly oxidizing इसका मतलब क्या हुआ? वो readily इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, वो रिड्यूस होना चाहेगा, तो आगे वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा. और ऐसा इसलिए बिकॉज इन केस ऑफ Pl इनर्ट पेयर इफेक्ट हाई स्टैक कर रहा है, तो वो प्लस 1 में एग्जिस्ट करना चाहता है प्लस 3 में. तो प्लस 3 अगर तुमने क्रिएट ही कर दिया तो वो प्लस 1 में तो चेंज होना चाहेगा बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स. अब ऑक्सीडेशन नंबर्स में जब चेक करते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स बनते थे विल बी आयनिक और हायर में जो बनेंगे वो कोवैलेंट. तो एक जनरल पॉइंट लिख लो वहां पे, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर कोवैलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड increases with increase in oxidation number. Covalent nature of bond increases with increase in oxidation number. तो प्लस 1 वाला जो कंपाउंड बन रहा है वो मोस्टली क्या रहेगा, वो आयनिक होगा. प्लस 3 वाला जो बन रहा है दैट विल बी कोवैलेंट इन कैरेक्टर. वो थोड़ा बहुत ऑर्डर वैसा पूछ सकते हैं उसका.
तो इसमें जब कंपाउंड्स फॉर्म होंगे उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या इन ट्राइवेलेंट स्टेट। जैसे बोरोन का एग्जांपल लेते हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना 5, तो ये होता 1s2 2s2n 2p1, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और p के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दिस कंडीशन ये बॉन्ड कितने बना सकता है, अनपेयर्ड तो एक ही है, कोवेलेंट बॉन्ड एक ही बनता, बट वी नो कि अगर सेम ऑर्बिट में अपने पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एम्प्टी ऑर्बिटल, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन गेट अनपेयर्ड एंड टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, वो हो सकता है। तो एक्साइटेशन अगर इस तक किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इसके पास चले जाए, तो अब ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है। अब 3 बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद स्टिल इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा। तो मान लो इससे BH3 का एग्जांपल लिया, तो BH3 में अपने पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, so it will act as a Lewis acid। और BH3 में क्या होता था, which type of bonding, बनाना बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड बनता था। ये ओवरलैप करता था, ये ओवरलैप करता था, उसको हम बनाना बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड। या फिर इसको 3C2 भी बोलते थे, 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, and this compound B2H6 is called diborane। ये बना लो, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर पाए, तो भी बॉन्डिंग में हुआ, वैसे तो ठीक है, इस टॉपिक में भी है। वैसा ये एक तो ये ब्रिज बॉन्ड बना रहा है, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो BCl3 मान लो अगर इसमें बैक बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं होगा, BF3 रहा तो उसमें बैक बॉन्डिंग हो सकता है, स्मॉल साइज है, इफेक्टिव ओवरलैप होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर NH3 से एक्सेप्ट कर सकता है उस केस में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो रहा है, तो ये एक्सेप्टर एटम हो गया, ये डोनर एटम हो गया इसमें। इनफैक्ट एल्यूमिनियम में भी जब हम लोग चेक करेंगे तो एल्यूमिनियम क्या होता है, पेपर फेज में डायमर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। AlCl3 भी जब बनाओगे तो ऑक्टेट तो उसका भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट जब क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम इलेक्ट्रॉन ओवरलैप नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। तो क्लोरीन का एक पेयर इससे बॉन्ड बना सकता है, इधर बॉन्ड बन सकता है, इधर बॉन्ड बन सकता है और इधर बॉन्ड बन सकता है। तो AlCl3 exists in dimer state as Al2Cl6। AlCl3 exists in dimeric form, और ये सारे एज स्टेटमेंट्स एग्जाम में आए हुए हैं। AlCl3 इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डायमेरिक फॉर्म में रहता है। जस्ट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं।
AlCl6 का जो स्ट्रक्चर बना है मोनोडाइमर फॉर्म का, तो उसमें बॉन्ड सारे इक्वल होंगे क्या? दो टाइप के बॉन्ड्स हैं, क्लोरीन इनसाइड में प्रेजेंट है, क्लोरीन आउटसाइड में प्रेजेंट है। क्या लेंथ इक्वल मिलेगा? ऐसा एक और एग्जांपल किया था वैसे हम लोगों ने डी ब्लॉक में किया था। Cr2O7 2 माइनस का ब्रोमीन के साथ ऑक्सीजन बाहर की तरफ भी था और इनसाइड की तरफ भी था। उसमें क्या बताया कि जो ऑक्सीजन का बॉन्ड इनसाइड में बन रहा था उसमें रिपल्शन हायर था, वो स्ट्रेच हो जाता तो लेंथ हायर मिलता था। सेम यहाँ भी लेंथ हायर मिलता है जो इनसाइड वाला बॉन्ड है उसका। और इसको चेक करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है बट साइज का ऑर्डर याद रखना है। दिस इज अराउंड 206 पिकोमीटर और ये 221 पिकोमीटर। वो तो इनसाइड वाला स्ट्रेच हो जाएगा ताकि एटम्स दूर रहे, जो रिपल्शन हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो। तो लेंथ अलग अलग है, तो लेंथ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब भी एटम दूर हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, दैट इज बिकॉज कि वो रिपल्शन और कम हो पाएगा। रिपल्शन कम हुआ तो स्टेबिलिटी हाई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, in trivalent state, most of the compounds being covalent. In trivalent state, most of the compounds being covalent are hydrolyzed in water. Are hydrolyzed in water. Are hydrolyzed in water. Trichloride hydrolyzes to trichlorides hydrolyzes to form MOH whole 4 minus
इसका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 which is tetrahedral shape. एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो बाकी सब के लिए एप्लीकेबल है. एल्यूमिनियम क्लोराइड थोड़ा सा डिफरेंट है. सो एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन. Acidified aqueous solution forms H2O whole 6 3+. तो इसका जब हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे दैट इज sp3p2. एल्यूमिनियम का ऑर्बिट कौन सा आउटरमोस्ट ऑर्बिट 3 है, तो उसके पास d ऑर्बिटल भी अवेलेबल, तो उसको यूज करके ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकता है. शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल. ये हाइड्रोलिसिस पे क्या करना है. तो सिंस एल्यूमिनियम का थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आता है वो पूछते हैं स्टेटमेंट में. और ये अभी जो कर रहे पॉइंट्स मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. मेन का जो क्वेश्चन उसमें ये आता है इंक्लूडेड. सिर्फ जो कंपाउंड स्टडी करेंगे वो नहीं है उसमें. नेक्स्ट पे आता है इनका रिएक्शन में रहेगा फर्स्ट रिएक्टिविटी विद एयर. जो पॉइंट्स दिख रहे थे उसी में अगला जो पॉइंट लिख लो रिएक्टिविटी विद एयर. थर्टीन ग्रुप के एलिमेंट जो है अगर उनका एयर से रिएक्शन होगा तो उसमें क्या फॉर्म होगा. तो एयर में दो चीजें ये प्रेजेंट है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उनसे रिएक्शन हो सकता है. सो एलिमेंट प्लस O2 that can form E2O3. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ऑक्साइड बनेगी. नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो नाइट्राइट फॉर्म कर सकता है. बोरोन ऑक्साइड इज एसिडिक B2O3. Aluminum and gallium oxide are important. Indium and gallium oxide are basic. इन ऑक्साइड्स का कैरेक्टर रहेगा. बोरोन ऑक्साइड एसिडिक रहेगा B2O3. एल्यूमिनियम और गैलियम ऑक्साइड N4. इंडियम और गैलियम ऑक्साइड DC. तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फेटिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, वैसे भी इसी कैरेक्टर इंक्रीज होगा. प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में शुरू होगी. अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज वैसे कर भी सकता है तो ऑप्शन ऑफ क्लोरीन और वैसे स्टेबलाइज कर सकता है.
तो बोरोन और एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते थे, नॉर्मली उसका रिएक्शन नहीं होता है, बोरोन तो अनरिएक्टिव है मोस्टली। और एल्यूमिनियम में क्या होता है कि पैसिव ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाता है, तो ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो गई तो उसके बाद वो और ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो अमॉर्फस फॉर्म अगर उसका अवेलेबल रहा तो उस केस में रिएक्शन हो सकता है, फिर उसमें फर्दर आगे तक रिएक्शन हो सकता है। इस पॉइंट को लिख लो उसमें, बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, रिएक्टिविटी विद एयर वाले पार्ट में, बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, boron is unreactive in crystalline form, whereas aluminum forms a thin oxide layer, which prevents any further oxidation. Boron forms a thin oxide layer which prevents any further oxidation. तो B2O3 अगर तुम्हें क्रिएट करना है या फिर A2O3 क्रिएट करना है, you have to use amorphous boron and aluminum. और amorphous क्या होता था, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहा तो इट इज क्रिस्टलाइन, सॉलिड स्टेट में पड़ा था। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज। Reactivity towards acid and alkalis. Boron does not react with acid and alkalis. Boron does not react with acid and alkalis even at moderate temperature. Whereas aluminum dissolved in mineral acid, as well as aqueous alkalis, showing amphoteric behavior. तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन एसिड से भी हो सकता है और एल्कली से भी हो सकता है, और दोनों केसेस में वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। देखो एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर होगा HCl के साथ aqueous, so AF3 plus aqueous, Cl minus aqueous and plus H2 gas। रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन इसमें रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव वैल्यू 3 नॉट का। सिमिलरली एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर किया बोन एल्कली के साथ NaOH, तो यहाँ फॉर्म होगा A, सोडियम एल्यूमिनेट करेंगे या फिर NaOH4 प्लस H2 यहाँ भी आउट होगा। जो कॉम्प्लेक्स बना उसका नेम क्या लिखते हैं?
ड्रिप क्यों बोलोगे? कॉमन आयन जो होता था उसको हम लोग क्या स्टेट करते थे? जो कॉमन नेम होता है सिंपल आयन हो जाएंगे। काउंटर आयन है ना, ब्रैकेट के बाहर है। कॉमन नेम जो होता था वो एप्लीकेबल है इसके लिए, तो Na के लिए सिंपली क्या लिख सकते हो? सोडियम। फिर जो कॉम्प्लेक्स रहा उसका नेम लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो था उसका नेम फर्स्ट लिखते थे, तो ये होगा टेट्रा हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्सिडो। अर्लियर हाइड्रोक्सो लिखते थे, अभी हम लोग हाइड्रोक्सिडो लिखते हैं, सिर्फ ई को हटा के वो लगाते हैं। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्सिडो, और ब्रैकेट पे चार्ज कितना नेगेटिव है, तो इसको क्या लिखोगे? लास्ट में एटी ऐड करना पड़ेगा, एलिमिनेट होगा, क्योंकि जो चार्ज होता था उसके अकॉर्डिंगली इसका नेम होता था चेंज। सो टेट्रा हाइड्रोक्सो एलिमिनेट 3। ऑक्सीडेशन नंबर फिर स्टॉक नोटेशन में लिखते हैं। तो एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि ये रिएक्शन हुआ, जो कॉम्प्लेक्स बना उसका नाम क्या होगा? तो रिएक्शन भी आएगा, जो कॉम्प्लेक्स का है वो भी इंक्लूड हो गया, नाम इंक्लूड हो गया उसमें। प्लस एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन भी है, वो भी हो गया। नेक्स्ट पर आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। Elements of this group forms halides of the type EX3 except for PlI3। ये नहीं बनता, बाकी सब फॉर्म है। So E plus X2 will form EX3। X can be chlorine, bromine, bromine, iodine। अब इसके बोरोन का रिएक्शन करते हैं। So BF3 BCl3 BBr3 है, Bi3 है। BF3 के स्ट्रक्चर में यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बैक बॉन्डिंग हो सकता था इसमें ऐसा, बैक बॉन्डिंग। So as the size of halogen atom increases, back bonding decreases। जैसे जैसे हैलोजन का साइज इंक्रीज होगा, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होता जाएगा। Lewis acid strength is inversely proportional to back bonding। तो इसमें BF3 हाईएस्ट होता, then BCl3, then सॉरी उल्टा है, बैक बॉन्डिंग जिसमें हाईएस्ट है वो सबसे कम हो जाता।
BBR3 ये लिख के रखो और इसमें पूछ सकते हैं। तो reactions of protein group in general जो थे वो हो गए फिर anomalous property next देखो anomalous property of बोलो anomalous property of boron तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हर ग्रुप का उसमें anomalous property इसलिए मिल रहा है बिकॉज बहुत स्मॉल साइज है d ऑर्बिटल नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्सट्रीमली हाई तो उसका बिहेवियर रिमेनिंग एलिमेंट जो उस ग्रुप के होंगे उससे हमेशा अलग रहेगा तो फर्स्ट में जब चेक करें तो उसमें आयनेशन थेरेपी का भी अच्छा खासा डिफरेंस आता था साइज का भी डिफरेंस था बहुत 40-50 यूनिट्स का वो चेंज था साइज का फर्स्ट पॉइंट लिखो the trichloride bromide and iodide the trichloride bromide and iodide of all these elements being covalent in nature of all these elements being covalent in nature are hydrolyzed in water are hydrolyzed in water are hydrolyzed in water and species like MOH whole 4 MOH whole 4 minus and MH2 whole 6 3 plus MOH whole 4 minus 1 and MH2 whole 6 3 plus exist in aqueous medium except for boron तो बोरोन में ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर पाता है बट और सब भी एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट फॉर बोरोन तो बोरोन इसमें सबसे डिफरेंट Next point, due to absence of d orbitals, maximum covalency of boron is 4. Maximum covalency of boron is 4. In other elements, it can exceed 4 as well.
तो जहाँ पे डी ऑर्बिटल है वहां यूज हो सकता है, देयर इज अ चांस। अब जैसे तुमने एल्यूमिनियम का Al होल 6 बनाया, तो होल 6 में वहां कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 6 बॉन्ड बन रहे हैं। 6 बॉन्ड बनने के अपने पास 6 ऑर्बिटल होने चाहिए। sp में ऑर्बिटल सिर्फ 4 हुए, मतलब वहां पे डी यूज हो रहा है, तो डी है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, डी में है यूज कर सकते हैं। तो 13 ग्रुप का ये हो गया। फिर कंपाउंड्स इनके आते हैं। तो एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ ईच ग्रुप, यहाँ तक जो पढ़ेंगे तक इट इज इन मीन्स, मीन्स में इस पोर्शन तक आएगा। जो कंपाउंड्स इसके बाद आते हैं वो मेन में नहीं, वो फिर एडवांस में आएगा। तो यहाँ तक का है, हर ग्रुप का कर लेते हैं पहले, तो मेन एक पोर्शन ओवर हो गया। फिर जितने कंपाउंड्स करेंगे वो सिर्फ एडवांस में बांटेंगे। तो नेक्स्ट देखो, the chemical properties of group 14 elements. Chemical properties of group 14 elements. तो पहले इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ये देखो, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। तो कार्बन जैसे फर्स्ट एलिमेंट है इसका, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हुआ। इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट इज 1s2 2s2n 2p2। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन और p के पास 2 इलेक्ट्रॉन। वन पेड इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 ही है वैसे, बट सेम ऑर्बिट में अपने पास पेड इलेक्ट्रॉन है और एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो अनपेयरिंग हो सकती है एंड दैट कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो ये अनपेयर किसमें चला जाएगा? सो नाउ वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन अपने बॉन्ड्स हमेशा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनाता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयरिंग अपने आप नहीं होगी, इस ऑर्बिटल की एनर्जी इससे हाईयर है, तो अनपेयरिंग में तुम्हें एनर्जी ऐड करना पड़ेगा हमेशा, ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के वहां जा पाए। तो जितनी एनर्जी तुमने दी, बॉन्ड फॉर्म होने के बाद उससे हायर एनर्जी इवॉल्व हो जाना चाहिए, तो फिर वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो मोस्टली ऐसा होता है, इसलिए अनपेयर हो भी पाता है। इन अनपेयर इफेक्ट में एक चीज नहीं पता था कि वहां एक्साइट करने के लिए तुमने जितनी एनर्जी दी, जब बॉन्ड बनता है तो उतनी एनर्जी आउट नहीं हो पाती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड था, तो हाई एनर्जी ऐड करनी पड़ी, तो इसलिए वो स्टेट में नहीं जाना चाहता। तो अनपेयर इफेक्ट यही है। ये लिख लो, फिर इसका पॉइंट लिखा है। तो पहला पॉइंट इसको लिखो, एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, elements of this group generally show, elements of this group generally show +2 and +4 oxidation state. Elements of this group generally show +2 and +4 oxidation state. Carbon can also show, carbon can also show negative oxidation states, negative oxidation states. And as the sum of first 4 initial enthalpies, as the sum of first 4 initial enthalpies are very high,
Some of phosphorylation therapies are very high. Compounds in +4 oxidation states are covalent in nature. Compounds in +4 oxidation state are covalent in nature. Find out the oxidation number of carbon in each case. इन पांचों केसेस में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो हर केस में. जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो H और O का होता है वही अप्लाई करना है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कितनी 2.1 और कार्बन का 2.5. तो उनके बीच में जब एक बॉन्ड बनेगा तो नेगेटिव वो कार्बन को देगा और पॉजिटिव हाइड्रोजन के पास जाएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम उसमें प्लस रहता है. ऐसा भी फाइंड कर सकते हो. तो CH4 में जो ऑक्सीडेशन नंबर मिला कार्बन का वो कितना -4 आ रहा है इसमें. CH3OH में माइनस हुआ है. HCHO में 0, NCOH में +2, CO2 में +2. तो -4 से +4 तक ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है और कार्बन एटम. देन स्टेबिलिटी ऑफ +4 oxidation state decreases down the group.
whereas the stability of +2 oxidation state increases down the road. So Sn plus 2 is reducing in nature, क्योंकि Sn plus 2 plus 4 हो सकता है, whereas Pb plus 4 is oxidizing in nature. तो Pb plus 4 क्या करेगा, वो plus 2 में चेंज होना चाहेगा, तो ये behaviors अलग अलग है यूनिट पे इफेक्ट है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम्स में आए हुए हैं. Sn plus 2 से plus 4 होना चाहेगा और Pb plus 4 से plus 2 होना चाहेगा. Is that correct? तो स्टेटमेंट राइट है, तो उसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है. ये इसमें लिखो आगे. Next point, being electron precise molecules, they are not expected to act as electron acceptor or electron donor. Next point, covalency of carbon cannot exceed 4. Due to unavailability of d orbitals. Next point, other elements of the group have d orbital, have access to d orbital.
have access to d orbital. Other elements of the group have access to d orbital, as a result of which, they can undergo hydrolysis. They can undergo hydrolysis करने को their halides can undergo, क्योंकि एलिमेंट हाइड्रोलाइज नहीं होता, जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं. Their halides undergo hydrolysis and they have tendency to form complexes, by accepting electron pair from donor species. तो कंपाउंड्स मतलब चार से ज्यादा बॉन्ड भी बन सकता है, सिर्फ कार्बन में वो नहीं बनेंगे. जैसे अगर हम लोग SI का लें तो SI F6 2- हो सकता है. तो सिलिकॉन के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 थे, बट बाकी दो एक्स्ट्रा जो F- आएंगे वो एम्प्टी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेंगे. सेम वी कैन सी GeCl6 2- या फिर 10 हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं SnOH6 2-. तो इन सब में हाइब्रिडाइजेशन जब चेक करेंगे दैट इज sp3d2, डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है. एग्जांपल करें तो जो हाइड्रोलिसिस वाला पॉइंट लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कार्बन के हैलाइड्स होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, तो उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है. सिलिकॉन के जो क्लोराइड्स होंगे वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, या जो हैलाइड्स इन जनरल है वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे. तो इसके ऊपर है क्वेश्चंस ट्रीटमेंट वाइज. ये लिखो देन. नेक्स्ट पर लिखोगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. Reactivity towards oxygen. So element of this group. Elements of this group form oxides of the type. Elements of this group form oxides of the type MO and MO2. MO and MO2. मोनोऑक्साइड भी बनेगा और डाइऑक्साइड भी बनेगा. एक में ऑक्सीडेशन नंबर +2 था और एक में ऑक्सीडेशन नंबर +4 था. जनरली चूज होता है MO and MO2. Then इसमें अगला पॉइंट oxides in higher oxidation states. Oxides in higher oxidation states are generally more acidic. Oxides in higher oxidation states are generally more acidic than those in lower oxidation states. Than those in lower oxidation states. Than those in lower oxidation states. इसमें तो the dioxides. CO2, SiO2 and GO2. The dioxides CO2, SiO2, GO2 are acidic in nature.
whereas SnO2 and PbO2, whereas SnO2 and PbO2 are amphoteric in nature. Amphoteric in nature. ये डाइऑक्साइड्स का बिहेवियर है, तो पहले 3 डाइऑक्साइड जो बने वो एसिडिक और लास्ट के 2 जो है वो एम्फोटेरिक. नेक्स्ट पॉइंट, among monoxides CO is neutral. Among monoxides CO is neutral. GeO is acidic. Whereas PbO and SnO are amphoteric. तो बी ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स होंगे उसके बिहेवियर में जब जाओगे तो यहाँ पे ऑक्साइड्स के टाइप बन सकते हैं 4. बेसिक हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, एम्फोटेरिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है. तो न्यूट्रल में CO आएगा, NO आएगा, N2 आएगा और H2 आएगा. तो नॉर्मली ये 4 ही रहते हैं. तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स एज एन एग्जांपल और एज अ स्टेटमेंट आते हैं एग्जाम में, और बाकी सारे और जो ऑक्साइड्स वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. नेक्स्ट लिखो फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. कार्बन से जर्मेनियम एसिडिटी बढ़ सकती है. हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर डिस्टिंक्टली वहां पे एसिडिक काइंड ऑफ एक्सेप्शन उसको बोल सकते हो. नॉर्मली क्योंकि होना क्या चाहिए अपने पास नेचर जब लोग चेक करते हैं तो फर्स्ट ऊपर एसिडिक होना चाहिए था और नीचे बेसिक एम्फोटेरिक की तरफ जाना चाहिए था, बट फर्स्ट यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड मिला और दूसरा यहाँ पे एसिडिक हो गया. सिलिकॉन का ऑक्साइड नहीं, ऐसा ही वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे वो नॉर्मली नहीं मिलेगा. बाकी सबके मोनोऑक्साइड्स बनते हैं. जैसे चाहिए तो स्टेट करो कि मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है तो SiO वहां पे एग्जिस्ट कर सकता है. तो SiO एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर, जनरली एग्जिस्ट नहीं करेगा. SiO एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर, उसमें वो रिलेवेंट नहीं होता. SiO एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर. देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. Carbon, silicon, and germanium are not affected by water. तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई इफेक्ट नहीं होगा. Whereas tin decomposes tin decomposes steam to form tin dioxide SnO2 and releases hydrogen gas. ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है. Lead is unreactive due to formation of oxide film, oxide layer. तो टिन का रिएक्शन स्टीम के साथ हो पाएगा जिसमें वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. टिन डिकम्पोजेस tin to form hydrogen gas. तो वाटर के साथ एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, SN का रिएक्शन हुआ विद H2O to form SnO2. Then reactivity towards halogens. Reactivity towards halogens. First one is very good.
Elements of this group form lines. Elements of this group form line of the type EX2 and EX4. Elements of this group form lines of the type EX2 and EX4. EX2 and EX4, where X is equal to chlorine, chlorine, bromine, iodine. Chlorine, chlorine, bromine, iodine. Next point. Except carbon. Except carbon. All other members. Except carbon. All other members react directly with halogen. Except carbon. All other members react directly with halogen under suitable condition. React directly with halogen under suitable condition to form halides. Next point, except SNF4. Except SNF4 and PbF4. Except SNF4 and PbF4. All other tetrahalides. All other tetrahalides are covalent in nature. All other tetrahalides are covalent in nature, in which the central atom undergo sp3 hybridization. In which the central atom undergo sp3 hybridization. So PbI4 does not exist. PbI4 does not exist. PbI4 does not exist. तो PbI4 exist क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन उसका स्टेट कर सकते हो? पहला तो एलेट पेरेंट होगा और जीरो सकते हैं कि एवरेज साइज तो पीबी में नेट पेयर इफेक्ट काम करने वाला है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करना इजी है. तो नेट पेयर इफेक्ट सिंपली क्या है कि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस. तो इसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं होना चाहिए, मतलब अगर तुमने उसको अनपेयर किया तो बहुत हाई एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी. फिर जब पीबी और आई का बॉन्ड बनेगा तो आई ऐसा हैलोजन, उसका साइज बहुत लार्ज है, तो इंटरेक्शन विल बी वीकर. इंटरेक्शन वीक हो तो एनर्जी जो इवॉल्व होगी वो कम रहेगी. फ्लोरीन में बहुत हाई एनर्जी इवॉल्व हो रहा है तो वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा वहां पे, और इसलिए स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए एडेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो एनर्जी का रिलेशन है उसका. नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, heavier members of the group. Heavier members of the group. Bracket में लिखो G to PB. Heavier members of the group G to PB are able to make halides. Are able to make halides of formula. Are able to make halides of formula MX2.
are able to make halides of formula MX2, and stability of dihalides increases down the group. Stability of dihalides increases down the group. तो जर्मेनियम की अगर हम लोग चेक करेंगे तो जर्मेनियम पे टेट्राहैलाइड जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू डायहैलाइड, whereas lead के लिए उल्टा हो जाएगा, उसका डायहैलाइड स्टेबल होगा ज्यादा एज कंपेयर टू टेट्राहैलाइड। माइनट पे इफेक्ट आ जाता है। ये देख सकते हो इसको। GeX4 is more stable than GeX2 and PbX2 is more stable than PbX4. इसका स्टेबिलिटी हो then except CCl4 other tetrachlorides are readily hydrolyzed CCl4 is not hydrolyzed due to unavailability of d orbital. मान लो जैसे SiCl4 का एग्जांपल लिया हम लोगों ने और इसका रिएक्शन वाटर के साथ करें तो यहाँ हाइड्रोलिसिस होगा। तो पहले H2O को अटैक करना पड़ेगा। H2O के अटैक करने के लिए तुम्हारे पास d ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसके पास d ऑर्बिटल है तो H2O इससे अटैच होगा, फिर Cl वहां से हटता और H2O का एक H हटता तो HCl एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले स्टेप में Si 3Cl है और 1Cl रिप्लेस हो गया बाई OH। तो OH के आने के लिए पहले H2O को लगना पड़ेगा और H2O अटैच होने के लिए d ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसके पास d ऑर्बिटल है इसलिए H2O अटैक कर पा रहा है। CCl4 में d ऑर्बिटल है ही नहीं और Cl आउट हुआ नहीं है तो H2O अटैक कैसे करेगा, तो इसलिए वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है। यहाँ पे HCl बाहर चला गया, यहाँ पे फिर और 3H2 अटैक करेंगे, 3HCl बाहर और तीनों क्लोरीन के प्लेस पर OH। तो ये हो जाएगा सिलिसिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CCl4 क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होता, बिकॉज उसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है।
ओके ठीक है तो रिएक्शन इसके हो गए फिर एनामलस बिहेवियर of carbon. Reason will remain same, small size, high conductivity and availability of p orbitals. So वो नहीं change होगा. So इसमें एक point लिखो. Anomalous behavior में first point लिखो. Carbon has a unique ability. Carbon has a unique ability to form. Carbon has a unique ability to form p5 multiple bonds. p5 multiple bonds with itself and other atoms of small size and high electronegativity. With itself and other atoms of small size and high electronegativity. Like OSN. तो कार्बन की केस में हम लोग देखते हैं तो वहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है जैसे C डबल बॉन्ड C हो सकता है C ट्रिपल बॉन्ड C हो सकता है C डबल बॉन्ड O हो सकता है C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है सिमिलरली C डबल बॉन्ड S भी हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज है मल्टीपल बॉन्ड्स बन सकते हैं तो मॉडल लेंथ स्ट्रेंथ ऑलरेडी इसका होगा वो कर सकते हो ऑर्डर क्या बनेगा तो ऐसे बॉन्ड्स फॉर्म होने के लिए वहां पे क्या होना चाहिए कि इफेक्टिव ओवरलैप होना चाहिए तो स्मॉल साइज जो भी ओवरलैप करता है क्योंकि जो कार्बन एटम है उसका साइज स्मॉल है काफी साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाएगा नेक्स्ट अगला पॉइंट इसमें देखिए heavier elements do not form p5 bonds p5 bonds because their atomic orbitals are too large and diffuse to have effective overlapping are too large and diffuse to have effective overlapping. Next point. Carbon can form bond with itself. Carbon can form bond with itself to create chains and rings. This property is called catenation. It is due to high strength of carbon-carbon bond. It is due to high strength of carbon-carbon bond
The order of catenation decreases down the group. The order of catenation decreases down the group. The order of catenation decreases down the group. तो कार्बन की जो ability है that is much higher than silicon. Silicon, germanium और antin are almost close to each other. तो highest is for carbon और वो relevant भी है काफी वहाँ पे. इतने सारे जो compounds बनते हैं. तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स इसलिए एग्जिस्ट कर पाते हैं बिकॉज वो कैटेनेशन कर सकता है, लॉन्ग चेन रिंग्स बना सकता है और पी बॉन्ड बना सकता है. इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स उससे मिलता है. लास्ट पॉइंट इसको ऐड कर दो. कार्बन हैज वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स. कार्बन हैज वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स. Various allotropic forms due to property of p-pi bond formation and catenation. Due to property of p-pi bond formation and catenation.